फ्रेंड्स फटाफट आइए जरा, प्लीज कम फास्ट। Right, students? So we have started with the function. I have explained you the definition of a function. Can anybody tell me what is the definition of a function? Yes, students. ये जो फ्रंट बेंच पे बॉयज बैठे हैं बताइए जरा। हाँ जी, आ जाओ आप आ जाओ। यस, नहीं सरदार जी आप आ जाओ, कोई बात नहीं। प्लीज कम एंड एक्सप्लेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। हाँ जी बेटा। यस, व्हाट इज फंक्शन। कैमरे में आ जाओ बेटा, कैमरे से बाहर नहीं जाना है तुम। हाँ जी बताइए बेटा, आता है या नहीं आता है। Sir, which has a image in a इमेज function. ठीक है, बैठो बेटा मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए बेटा, द डिफरेंस बिटवीन ए रिलेशन एंड ए फंक्शन इज, नाउ इफ वी हैव ए फंक्शन from a set A to B, right? This is set A, this is set B. Every element of set A, every element of set A has a unique image in set B. Means this is a function. Agar there is one more element. Now is it a function? No. Because the last element does not have an image in set B. Now it is a function. When you remove that element, every element of set A has an image, a unique image in set B. Hence it is a function. Now, first condition is every element should have an image. Second condition is no element of set A has more than one image. Means, now if you do like this is not a function because this particular element have two images. So now it is not a function. Is this clear? It is a function now, right? So these are the two conditions of a relation to be a function. Now what is domain of a function? Domain of a function. Yes, students. Domain of a function is all the element of set A. All the element of set A. That is a domain. Means this will be set A. What is range? Range, those element of set B which has a pre-image in set A. That is range. Same definition, right? What is codomain? What is codomain? Set B. यहाँ पे set B आ जाता है, यहाँ पे आता है बेटा range. Those element of set B which has a pre-image in set A. If you want to write down, you can write down the definition of domain and range. Domain is set A is domain. This is very important topic. You should know how to find out the domain and range of a function. This question on domain and range will be there in your board paper also, means class 11th final exams also, as well as when you will appear for JEE. There will also be the question on domain and range. So you should have the clear knowledge about the domain and range of a function, right? Domain of a function is all element of set A. Range of a function, those element of set B which has a pre-image in set A. Elements of B, those have pre-image in set A. And codomain, all element of set B. That is codomain. Now we come to the how to find
domain of a function. How to find domain? Beta, there are three conditions to find out the domain of a function. You please write down. First is denominator of a function can't be 0. Right? Denominator of a function can't be 0. For example, if I have function fx is equal to 1 over x minus 2. Right? So how to find out the domain of this? This function is a denominator, means x minus 2 is not equal to 0. That's mean x is not equal to 2. Now x is not equal to 2. Can anybody tell me what will be the domain of this function? Yes, anyone? What is the domain of this function? R minus R minus 2. Very good, Bachu. This will be the domain of the function. Is this clear? Second condition is, what is the second condition? Can anybody tell me? What is the second condition to find out the domain of a function? Function in a square root is always greater than equal to 0. Always greater than equal to 0. Now what is the meaning of this? For example, I have a function x square minus 9. This is a function. Right, students? Now, what is the way to find out domain? This should be always greater than equal to 0. Why it should be equal to 0? If it is be negative, then it will become a complex number. That will become non-real. So, under root cannot be negative. So, how to solve this? You know how to solve this? You know how to solve this inequality? Can anybody explain me? बच्चे जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, यू कांट डू लाइक दिस. इस तरह से नहीं कर सकते बच्चों आप कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3. दिस इज अ रॉन्ग वे टू डू दिस. दिस इज नॉट द वे टू डू इट. देन हाउ टू डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक द फैक्टर. कैन वी राइट इट लाइक दिस? Yes or no? So from here, what are the value of x? Minus 3 and plus 3. Is it clear? Draw a number line. Draw this point. Let's see, this is minus 3, this is 3. How many interval we have? How many intervals we have now? One interval is this minus infinity to minus 3, then minus 3 to 3, and then 3 to infinity. हमारे पास बच्चों तीन फंक्शन इंटरवल बन रहे हैं. ये एक इंटरवल ये है. Since this sign is greater than equal to, so we'll put a square bracket. Second interval is minus 3 to 3, and third interval is 3 to infinity. Whenever you take infinity, whether negative or positive, it is always open interval. Remember this thing. Is this clear? It will be closed function if it is equal sign is there. It will be open function if it is not equal sign. So now you have three functions. Now what you will do, you will check by taking a point in these three interval whether it is positive or negative. For example, I take a point here, let's say it is 0. I have taken 0, put the value of 0 here. 0 minus 3 into 0 plus 3. Beta, now it satisfies the inequality or not? हाँ जी बच्चे, क्या आंसर आ रहा है? Minus 9 is greater than equal to 0. Is this true or false? हाँ जी, false नहीं है बच्चों ये. बेटा minus 9 जो है वो 0 से ग्रेटर तो नहीं है ना.
ना equal है, it is less than. So this function, let me explain on the, this is -3, this is 3, infinity, minus infinity. So now we have 3 interval. Right? When you taken the point 0 in this interval, what it becomes? -3 into +3. So it does not satisfy, means its value is below, its value is negative. बच्चे आप इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, its value will be below the, means below means negative. Whenever it is negative, now suppose you take any value here, let's say you are taking -5. When you put the -5 in the inequality, what is the inequality? This. When you put -5 means 25 minus 9. So बच्चे ये true है false है, positive आ रहा है, means this thing comes out to be 16. तो ये positive आ रही है बेटा, तो positive will be like this, upward. Similarly, when you take any point on this will be positive. So the value of this function from -infinity to -3 will be positive, -3 to 3 will be negative, and 3 to infinity will be positive. तो हमारे पास साइन आ गए बच्चे यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो नाउ वी वांट, व्हाट वी वांट, द फंक्शन शुड बी पॉजिटिव. टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, what should be the value? We can take this interval as well as this interval. So what will be the domain of the function? What is the domain of the function? -infinity to -3 union 3 to infinity. This will be the domain बच्चों. And this method is known as wavy curve method. क्या बोलते हैं इसको बच्चे? Wavy curve. Why it is called wavy curve? Because waves, curve जो बन रही है, that is in the form of waves. Right? Is it clear बच्चों? Is this clear or not? Yes, sir. Please इसको note कर लो बच्चों. Because this method is used a lot. Right, students? Just have a look. Any doubt in this? How to find out domain? So now we have done 2 points of finding the domain. One is the denominator is never 0. Second is the function in the square root is always greater than equal to 0. Right? Now I take one example. Let's say we have fx is equal to 1 over under root pi minus x. Please find out the domain of this function. Please find out the domain of this function. Sir, any real number except 5. हाँ जी, R minus 5. r minus 5. Yes, sir. How many says r minus 5? Please raise your hands. How many says r minus 5? Please raise your hands. अरे, किसने बोला था बेटा ये? हाँ जी, r minus 5 is wrong. See students, how to do this? What is the condition here? 5 minus x. See carefully. What is the condition of
Denominator, it should not be, this should not be equal to 0. यही होती है condition बच्चों, right? But at the same time, we have to apply the condition for square root also. What is the condition for square root? 5 minus x should be greater than equal to 0. Since it is greater than equal to 0, we will not take the equal to 0 because in that case denominator will be 0. So we'll only take this as the condition. This condition satisfies both these conditions. So 5 minus x is greater than 0. Now what if you solve this inequality, what you got this? That means x is less than 5. So the domain of the function will be minus infinity to 5. This is the domain. Right बच्चों? तो ये वाली जो आपने निकाला है ना बेटा, इसके अंदर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई है, दिस वन. अगर 0 आ जाता है तो 0 आने में तो बेटा हमारा डिनोमिनेटर खराब हो जाएगा, राइट? एंड आप क्या ले रहे हो, ये वाली कंडीशन. नाउ इफ इट इज ग्रेटर देन 5, suppose it is 6, 5 minus 6, under root minus 1, can the under root be negative? No. So therefore we'll apply this condition. Any doubt बच्चों? Any doubt? Right. So now the third condition to find out the domain is, student, have you done the log? Do you know what is log? केमिस्ट्री में अभी तक आप लोगों ने किया कुछ या नहीं किया लॉग वाला? चलो मैं अभी आपको लॉग के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ. लॉग इज बेसिकली एक फंक्शन होता है लॉग भी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू. इफ इट इज ए लॉगरिदमिक फंक्शन, a log function is always greater than 0. Always greater than 0. What is the meaning of this? If I have function fx, let's say it is log 3x minus 2. Now how to find out the domain of this? This is a log function. This is its function. Means this thing should be greater than 0. Only greater than, not equal even. It should always be greater than 0. So now what will be the domain for this function? X will be greater than 2 by 3. So domain will be 2 by 3 to, this is the domain of the function. Please note down this. Log क्या होता है बेटा, क्या इसका मीनिंग है, that we'll understand later on. You just write down how to find out the domain of a logarithmic function. How to find out domain of a logarithmic function. Okay बच्चों? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस पे. Find the domain of this function. Find the domain of this function. Better no talking please, girl students. Auntie done?
बेटा just study the three condition. Think over which condition needs to be applied here. R minus 2 and 1. R minus 2 and 1. R minus 2 and 1. How you have done it, beta? Clear factor कर ले. Yes. R Denominator, what is the condition you have applied? Denominator is not equal to 0. Now इसके factors बनाए बच्चों. ये आ गई जी. तो यहाँ से condition आ जाएगी R x is not equal to 2 and 1. So you are right बच्चों. The domain of the function will be R minus 1 comma 2. Is this clear? What can be the other way of writing this function? This domain. Can this domain be written in some other way? How to write? See students, when you are doing the MCQs, the same thing can be written as how? See, try to understand. I have drawn a number line. Let's say this is 1, this is 2. These are two holes here. How to write this? This part can be written as minus infinity to 1, union 1 to 2, union 2 to infinity. If you are doing MCQ, this way can be also, it can be written. Right, students? So this thing and this thing are one and the same thing. So you should not get confused in this. Is it clear? Is this clear, bachcho? Now we look at the next question. Now students, let's say we have this question. Fx is equal to under root 4 minus x plus 1 by x square minus 1. Now how to find the domain of this function? Will you try, bachcho? Will you try? Under root 4 minus x plus 1 over under root x square minus 1. Now students, what you will do here, you will apply this condition also as well as this condition also. तो दोनों condition का जो intersection होगा, that will be the domain of the function. Right? So what is the condition here? 4 minus x should be greater than equal to 0. Another is x square minus 1 should be greater than 0. Right? So solve these two inequalities. Whatever will be the intersection of these two inequality, that will be your answer. Right, बच्चों? हाँ जी, हो गया? हो गया बेटा? हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास क्या इनइक्वालिटी आ रही है? 4 is greater than equal to x means x is less than equal to 4. ये वाली आ रही है इनइक्वालिटी. When you solve this, x minus 1 x plus 1 greater than 0. आपने वेवी कर्व मेथड लगाना है यहाँ पे. -1 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. सबसे इजी वे क्या होता है बच्चे? You take 1 point here. Let's say you take 0. When you put 0 here, 0 minus 1 greater than 0. Is that true? नहीं ना बच्चे, अगर आप 0 पुट कर रहे हैं, इसके अंदर पुट कर रहे हो,
So it will be like this. Is this clear? तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, but when you put anything less than -1, let's say you are putting -2 here, so -2 square will be 4, 4 minus 1, 3. So this will be positive. Here also this will be positive. If you put 2, 3, 4, 5, anything, right? So what is the result from here? What is the result from here? Minus infinity to -1, both are not included. Union 1 to infinity. Now tell me what will be the domain. I have solved both the inequalities. Tell me what will be the domain. Can anybody tell me what is the intersection of these two results? Yes, students. What will be the intersection of these two results? एक ये वाला है बच्चों, दूसरा रिजल्ट ये है आपका. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? देखिए जरा, मैं नंबर लाइन पे आप लोगों को बताता हूँ. X is less than the, yes. देखिए बच्चे, यहाँ पे x is less than equal to 4. दूसरा रिजल्ट है बेटा -infinity to -1, राइट. अब यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. देखो ये 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी. दिस इज -1, 1 and 4. Please look at the board, right? So now I am changing the colors. देखिए बेटा, ये जो इनइक्वालिटी है, दिस आई रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट. यहाँ पे भी होल है बेटा. दिस इज आल्सो होल and it is like this. Is this clear? Now see this. Now what is this result? This is this clear बच्चों? Is it clear? Can you see this upper one is this result and x is less than 4, जो नीचे वाला result है. Now what will be the intersection of these two results? ये वाला part and this part. इससे इधर वाला सारा. So how you can write it? This will remain as it is. यहाँ से आ जाएगा union 1. Now tell me 4 will be included or excluded? 4 is included ना बच्चों, ये देखिए. So this will be the result. This will be the domain of this function. Have you understood? बेटा किस किस बच्चे को नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों को नहीं क्लियर है. Whatever the condition we have done for the domain, first of all हमने दोनों conditions लगाई. Then we got the two inequalities. We have solved that inequalities. Then whatever is the result of the two inequality, we have taken their intersection part. Right? Have you understood this? Have you understood or not? Have you understood? Please raise your hand if you have. बेटा कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड. यार आप ना अंडरस्टूड में कर रहे हो, नॉट अंडरस्टूड में कर रहे हो. तो क्या कंडीशन है आप लोगों की? अभी नहीं समझ आया? हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज रेज योर हैंड. या तो यस करो या नो करो बेटा. ये किस लिए बेटा? अंडरस्टूड के लिए, नॉट अंडरस्टूड के लिए? अंडरस्टूड. ठीक है, फिर ठीक है जी. और किसी को नहीं डाउट, नहीं क्लियर है तो बताइए जरा बच्चे. यस, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जी. राइट जी. Now find the domain of this function. Find the domain of the function. Please try this question बच्चों.
How to do this? Find the domain. हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे करना है ये? हाँ जी, क्या आ रही है डोमेन इसकी? यस टेल मी बच्चे, यस टेल मी। हाँ जी बेटा, माइक के पास आके आप बोल सकते हैं जरा? 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी? आवाज यस नहीं सर, क्लियर। नहीं नहीं, देखिए बेटा ये कैसे करेंगे, देखिए जरा पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए। नाउ वी हैव टू कंडीशन here. The function entirely is in the square root. ठीक है, and denominator is also there. First thing is denominator should not be 0, right? Means it not equal to 0. But since it is in the under root also, this thing should be greater than. Is this clear? Greater than 0. Chalo, for a moment leave this condition. Then comes to the another condition. The function inside the square root should be greater than 0 बच्चे? Yes or no? Yes sir. Now in this we can have two cases. First case is x minus 2 is also positive and x minus 3 is also positive. One case is this, right or not? Yes sir. What is the second case? Both are negative, right? So now what will be the condition from here? X is greater than 2 and x is greater than 3 means इन दोनों का जो टोटल रिजल्ट आ गया, क्या आ गया बेटा? x is greater than 3. Is it clear? Is it clear or not? ये ठीक है या नहीं है बच्चे, बताइए जरा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? अब दूसरा रिजल्ट आ जाओ, x is less than 2 and x is less than 3. Is this clear? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? सर केस तो कैसे किया है? हाँ जी, केस तो क्या कह रहे हो आप बेटा? केस तो केस 2 बेटा देखिए, अगर ये दोनों नेगेटिव है, ऊपर वाली टर्म भी नेगेटिव है, नीचे वाली टर्म भी है, तो ओवरऑल रिजल्ट तो पॉजिटिव बन जाएगा ना? यस और नो? yes sir. ओवरऑल पॉजिटिव आ गया हमारे पास, राइट? सो अब यहां से कंडीशन क्या आ रही है, देखिए अब इन दोनों का ना हमें इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लेंगे देखो जरा, यहां से क्या बन रहा है बेटा? ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया। x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 3 मीन्स इन दोनों से, ये देखिए 2 से ग्रेटर है और 3 से ग्रेटर है। अब दूसरे रिजल्ट में आ जाइए, लेस देन 2 एंड लेस देन 3। यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट आ रहा है? ये वाला पार्ट दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है जी? यस और नो? यस और नो? Yes sir. तो ये इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बच्चों? 2 to 3. नाउ 3 विल बी
2 इंक्लूडेड आ जाएगा, 3 जो है वो ओपन इंटरवल है, क्योंकि 2 इंक्लूड आ रहा है यहाँ पे और 3 ओपन आ रहा है। सो 2, 3, you can put any value in this, you will find a positive result. समझ में आया बच्चों, नहीं आया? Yes, sir. किसी को भी डाउट है? देखिए, जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर आ रहा है, या इफ सपोज देर इज नो अंडर रूट इज आल्सो नॉट देयर, ठीक है, तो देन आल्सो हाउ टू डू इट। अगर अंडर रूट नहीं होगा फिर तो सिंपल हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे अगर हमें दोनों कंडीशन टोटल पॉजिटिव चाहिए, तो टोटल पॉजिटिव के लिए केस 1 बोथ आर पॉजिटिव, केस 2 बोथ आर नेगेटिव। सो दोनों केस का जो इंटरसेक्शन हुआ, वी हैव टेकन दैट। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज ऑफ ए फंक्शन, देखिए बच्चे, जब भी किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है, now there is a standard way to find out the range of a function, but there are some function in which you need not to apply this concept also. For example, I have a function this. Now tell me what will be the domain of this function. What is its domain? What will be its domain? Beta, all real numbers. You can put anything now. Now what will be its range? अच्छा, आपको ये मॉड का मतलब पता है बच्चों, ये क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मॉड और नॉट? बच्चे, मॉड का मीनिंग पता है आप लोगों को या नहीं पता? यस और नो? नहीं पता? अच्छा, पहले मॉड ही बता देते हैं बेटा। आपने जूनियर क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट किया बेटा, मॉडुलस। ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? इफ आई राइट, सपोज आई राइट -2 इन दिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2। वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सपोज I have a function x -2. Now, whatever the value of x you put, whatever the value of x you put, suppose you put x as 1. What is the answer? What will be the answer, bachcho? Mod of -1, and this can be written as 1. Okay? So this is called the modulus function, right? So अभी मैं इसका ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, how we can draw the graph of a modulus function. Now, to find out the range of this function, the result of this entire thing will always be positive. बच्चे, ये पॉजिटिव ही आएगा ना हमेशा? yes or no? Whatever the value of x you put, let's say you put the x value of x as -50, so what it becomes? So that will always be positive. So range of this will be 0 to infinity. 0 to infinity. ठीक है? So whenever you will look at, you can tell us what the range of the function, right? But there is a method to find out the range of the function that I'll going to explain you. See बच्चे, what are the steps to find out range of a function? देखिए बेटा, ध्यान से नोट कर लेना। First step is find the domain of the function. जब भी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, तो you should know the domain of the function, right? Second thing is, now second step, understand carefully. Let y is equal to fx. क्या करना है बच्चे आपने? let y is equal to fx. ठीक है? थर्ड इज change
function into change into gy means, what is the meaning of this? Let's say I have a function fx is equal to x square minus 5, right ji? So what is the first step? क्या किया? Let y is fx. So equate this function equal to y. Now change the subject of this function from y to x. Now x square will be equal to, now what is x? Have you understood, bachcho? Is this step clear? Now this, what is this x? This gy. Now it is a function in y. So we can write this as, have you understood this step? Have you understood this step or not, bachcho? Have you understood or not? Beta, if yes, raise your hand. If no, raise your hand then. Okay, very good. No problem बेटा. देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी फंक्शन गिवन है उसको y के इक्वल ले लेना है बच्चों. y के इक्वल ले लिया तो ये फंक्शन आपका y के इक्वल आ गया यहाँ पे. अब आपको क्या करना है बेटा, यू नो व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बच्चों नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है. देखिए आपके पास इक्वेशन है बेटा, एक ये इक्वेशन है. नाउ इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 5. अगर आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू डालते जा रहे हैं, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x देयर. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो द वैल्यू ऑफ x डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स. x की वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है ना बेटा. तो दिस इज कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मीन्स its value does not depend, right? But whenever you put the value of x, if you are changing the value of x, the value of y will change. Yes or no? If you change the value of x, the value of y will change. Right or not, bache? So the y is dependent variable. The value of y depends on x. Have you understood the meaning of dependent and independent variable? Yes or no, bache? So now what you have to do here? Now what you have done here, you have taken y is equal to fx. तो y किसके इक्वल आ गया? x square minus 5. So now you are supposed to change the subject. Means here y is dependent variable, x is independent. You have to interchange them. You have to make y as independent and x as dependent. Have you understood this thing? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए. Yes or no, बच्चे? Yes or no? हाँ जी बच्चों बताइए जरा, यस और नो. Yes, sir. अगर यहाँ तक क्लियर है फिर तो सब कुछ क्लियर ही क्लियर है बेटा. यहाँ पे क्या आ गई? y की वैल्यू 5. नाउ यू कैन पुट y की वैल्यू एनीथिंग बेटा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? हियर y कैन बी एनीथिंग. You can put, there is no constraint on the value of y. So y can be all real number. Yes, yes or no? Yes. Right. So this is, so y, what is the y now here? Y is the range of the function. तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? All real numbers. Is it clear? Is this clear? Means ये देखिए ये वाला जो फंक्शन है आपका y plus 5, y plus 5 should be greater than equal to 0. तो y will be greater than equal to -5. y जो है -5 से ग्रेटर होना चाहिए ना बेटा. रियल नंबर अगर आप ले रहे हो, नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा.
तो this is not the correct thing. So value of y will be greater than -5. तो इस फंक्शन की जो रेंज आ जाएगी -5 टू क्या आ जाएगी? The range of the function will be -5 to infinity. Is this clear? Is this clear or not? Okay. फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो then you will understand. Now just write the points. Just note down the points, बच्चे. First point is that y is equal to fx. Then change the function into the x. Means x becomes a dependent variable and y is independent. Then see what can be the values of y. उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको ना फंक्शन की डोमेन निकाल देनी है एक तरह से. ठीक है जी. What will be the value of y? What will be the value of y? That is your range. ठीक. चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ आगे जरा. हाँ जी, चले आगे जी. देखिए बच्चे, आपके पास सपोज है कि लीनियर फंक्शन है. दिस इज a linear function. In class 10th you have drawn its graph. जब भी ग्राफ बनाते थे बच्चे एक लीनियर फंक्शन का या एक लीनियर इक्वेशन का, तो व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्राफ? क्या शेप रहती थी बच्चे इसकी? What is the shape of the linear function graph? Means when you put x as 0, the value will be 7. Means this will be the shape of the function. एक स्ट्रेट लाइन बनती थी बच्चे. ये ग्राफ जो है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यस और नो? यस और नो बच्चों? Yes, sir. Now from the graph we'll understand the domain and range. This is the x-axis. Can we put the value of x? Any value? So there is no constraint or no limitation on the value of x. So x can be any real number, right? So that is the domain of the function. If you look at the graph, it can go upward as maximum as possible and come downward as minimum as possible. Right, बच्चों? So this function will have range as, इसकी range जो आ जाएगी बच्चे, that is also real numbers. Is it clear? Is this clear or not? बेटा जो सारी x की वैल्यूज हैं, they are the domain. The values of y are range. आपने ग्राफ बनाया बेटा, ये देखो, it can go infinitely upward, it can go infinitely downward. So you can put any value of x. This will have some value. You can put any value of y. For any value of y, image of x. अब एक दूसरा ग्राफ लेते हैं बेटा. आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में ग्राफ्स किए थे. व्हाट इज दिस ग्राफ? ये कौन से फंक्शन का ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक का ऐसे ग्राफ बनता था बेटा. Yes, sir. यस और नो? Yes. नाउ ये जो नीचे वाला सबसे नीचे पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी. y की वैल्यू इससे नीचे तो नहीं है ना. Our graph does not go below this point
तो मीन्स ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इसको वर्टेक्स। बोलते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का जो वर्टेक्स y का जो y कोऑर्डिनेट होता है बच्चे, होता है, that is the lowest value of the range. value of the range. This is clear. Suppose this point is This point is 1 comma 1 let's say minus 5. let's say -5. This is clear. So range क्या आ जाएगी इस फंक्शन की? इस फंक्शन की -5 -5 to infinity. इस पॉइंट से ऊपर ही जा रहा है ना भाई, ऊपर ही जा रहा है ना भाई, इसके नीचे तो नहीं है. नीचे तो नहीं है। आर यू गेटिंग? Are you आपको getting? कुछ समझ आ रहा है? आपको कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. वट एवर द वैल्यू ऑफ y in this graph, This graph, that is the range. Whatever is the value of x, that is the domain. Is it clear ji? Is this clear or not? Now if the graph की shape देखिए, अगर ग्राफ की shape आपके पास change हो जाती है, now this is the shape of the graph. This is a vertex now. Let's say this vertex is 2,9. Now can you tell me what will be the range of the function? What will be the range? It can go downward infinitely, but it cannot go above this, the value of y. So what will be the range? Have you understood? समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? रेंज का क्या मीनिंग है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है या कैसे नहीं है, समझ में आया बच्चों या नहीं आया जी? ये कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग रेंज है डोमेन का? यस, इज दिस क्लियर? In the next class, we'll further study this more about the range, how to find out the range of different functions. Okay, bachon? So thank you very much for joining with us. Thanks very much, sir.